Video 2 of the banking sector module from a development perspective. I will be switching between English and Hindi to ensure that the medium of instruction is not a blocker for a single student out there. So do pardon me in case the pronunciations and all of that is a little haywire. But anyways, coming to the agenda of the module, ये module में हम तीन बेसिक पॉइंट्स कवर करने वाले आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉइंट नंबर वन बैंकिंग मॉडल एग्जैक्टली क्या है हाउ डज द बैंकिंग इंडस्ट्री फंक्शन हाउ डज इट मेक प्रॉफिट्स हाउ इज इट क्रिएटिंग वैल्यू सेकंड पॉइंट हम जो कवर करने वाले हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स वो क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिसकी जानकारी आपको रखना पड़ेगा इट विल बी ऑफ यूज टू यू व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द जॉब और अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हो तो इंटरव्यू स्टेज में भी आपको थोड़ा सा ये सब टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी नो अबाउट दीज टर्म्स एंड द थर्ड पॉइंट जो हम कवर करने वाले आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स की बेसिकली लास्ट 3-4 साल में बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या those major cases where which you must know of. It's good to have some background information, some historical context, and an understanding of recent developments in an industry that you wish to work in. From a skill development perspective, हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि regardless of which college you come from, regardless of whether you've done an MBA or not, regardless of what you hold on your CV, to my mind and basis a lot of research and an underlying research that has been done, there are two critical factors which can help you land up, in a line of work that interests you. What I'm basically trying to say is कि if ऐसा कोई भी अगर कुछ काम है कोई industry है which you're interested in, there are two factors which you can build on to enhance the probability of getting employed. ये दो factors में factor number one is domain knowledge. Again, that's just basically understanding of how that particular sector or that particular industry functions. And second thing is the technical expertise. जैसे कि अगर आपको banking sector में काम करना हो, तो there are certain tools that you need to be able to use you should be able to use. And let's say आपको Excel की भी knowledge रहना चाहिए. So things like that in terms of technical expertise is something that you need to build on. So now coming to the banking model basics, what is the first point that I'd like to cover is कि banking model exactly क्या होता है. Now in terms of an introduction, a bank basically looks to provide financial support to individual customers and to corporates. अब बैंक क्यों फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग. जैसे फ्रॉम अ इंडिविजुअल कस्टमर्स पर्सपेक्टिव ऐसा सोचिए कि लेट्स से आपको एमबीए करना है राइट और एमबीए करने के लिए आपको लेट्स से एक्स नंबर ऑफ लैक्स चाहिए. नाउ there can be cases where you may not want to or you may not be able to spend that kind of money as an investment on an educational course. तो आप बैंक के पास जाएंगे और बोलोगे कि why don't you financially support me right now? आप मुझे education loan दीजिए so that when I graduate, when I get a job, after that I'll start repaying you. So to do a particular activity, which is in this case let's say an educational course, आप बैंक से financial support ले रहे हैं. So that is a reason why banks are providing financial support. On the corporate side, जैसे अगर आपका कोई business है और आपको एक नया plant setup करना है, आपको नई machines खरीदने हैं या आपको आपका daily cash flow manage करना है या ऐसा कुछ, there are certain requirements जो businesses को भी होते हैं और वो वाले requirements के terms पे financial support provide करने के लिए bank as a financial institution steps in. So that is the crux of the banking model. It basically wants to serve loans to customers in order to support them for certain activities. एक point हमेशा ध्यान में रखिएगा, there is another type of a financial institution that basically does what a bank does as well. That is called a non-banking financial company or basically an NBFC. हमेशा ये ध्यान में रखिए, प्रॉब्ली आपको इंटरव्यू स्टेज में भी पूछा जा सकता है कि एक बैंक और एक एनबीएफसी के बीच में क्या फर्क होता है. The major difference is that bank accepts customer deposits and NBFC does not accept customer deposits. What do you mean by customer deposit? जैसे आपके आपके पेरेंट्स के पास
बैंक में कोई सेविंग्स अकाउंट रहेगी या कोई करंट अकाउंट रहेगा जहां पर आपका जो भी मंथली सेविंग्स या जो भी एडिशनल कुछ कैश है विच यू डोंट विश टू यूटिलाइज, you go and you deposit it in your bank. You need to know that that money actually stays with the bank and that bank uses that money to further give loans to a customer. वो थोड़ा सा complicated होता है in terms of the cycle of how it works, but basically bank is an institution that can accept money from customers, right? NBFC on the other hand does not accept deposits from customers. वो कुछ और तरीकों से funds raise करते हैं और market में loans देते हैं. So that's a key difference. I would want to make a disclaimer that on an exception basis, हाँ ऐसे कुछ cases है where there are customer deposit accepting NBFCs, but that's an exception basis और वो अभी is not a priority to discuss. So that's basically the difference between a bank and an NBFC. The third key point that I'd like to cover in terms of the banking model basics is कि अच्छा ठीक है, bank is providing financial support to customers, but from a business perspective, from a commercial perspective, एक बैंक profit कैसे बना रहा है, right? The way to visualize this is to I'd probably request you to keep this example in mind. Bank goes up to, let's say, people who have surplus funds like us who are depositing money in our savings account, and it's taking money from us at a particular interest rate. जैसे हमें अपने savings account में 4% interest rate मिलता है, right? That is वो पैसा जो बैंक लोन्स में दे रहा है, राइट? बैंक्स को ये पैसा 4% इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है. दैट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर अ बैंक, राइट? द सेकेंड थिंग इज द कॉस्ट ऑफ लेंडिंग फॉर अ बैंक. आई एम जस्ट कवरिंग अ कपल ऑफ टर्म्स बिफोर आई कम टू addressing the question of how does a bank make profit. We need to know about something called the cost of lending. तो अगर बैंक हमें एजुकेशनल लोन दे रहे हैं, राइट, तो वो हमें लेट्स से 15% इंटरेस्ट पे दे रहे हैं. That is called the cost of lending. अगर बैंक कोई बड़ा इंडस्ट्री को पैसे, कोई बड़ा कंपनी को पैसे दे रहे टू सेट अप अ न्यू प्लांट at let's say 12% interest rate, that is the cost of lending for that in that particular case. The second thing, the third key point that we must know is the operational cost. Now banks के पास offices होते हैं, banks के पास branches होते हैं, बैंक के पास अपने employees होते हैं, बैंक के पास अपने softwares होते हैं, bank has to pay for rent, electricity, a whole lot of things, right? All of that comes under the umbrella of operational cost. Now, the way a bank makes money is basically the lending revenue it earns by giving out loans in the market minus the borrowing cost. जैसे अगर हम कस्टमर से थ्रू सेविंग्स अकाउंट 4% इंटरेस्ट रेट पे पैसे ले रहे हैं हमसे, that is basically the borrowing cost minus the operational cost of running a bank, running the institution, paying salaries, paying rent, and paying other administrative expenses. So it is obvious that typically the lending cost, the cost of lending, the interest rate on lending has to be greater than the interest rate on borrowing for a bank to make profit. क्योंकि अगर वो 15% पे लोन दे रहे हैं और 5% पे वो ही लोन का पैसा रेज कर रहे हैं, राइट, तो उनका 10% उधर मार्जिन है. वो 10% मार्जिन में जो एब्सोल्यूट अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो थोड़ा सा ऑपरेशनल कॉस्ट की तरह चला जाता है, एंड जो बाकी रहता है that is the profit that a bank makes. So just to summarize, a bank's profit is basically the lending revenue minus the borrowing cost minus the operational cost. Now ये पूरे बिजनेस में बैंक का क्या रिस्क है? ऐसा क्या चीज हो सकता है जिसके वजह से बैंक may move from a profitable situation to a loss-making situation, or a bank may not just at an overall level do good business, right? यहाँ पर बैंक के पास बहुत सारे रिस्क होते हैं, but I think one, if from a fresher's perspective, one of the key risks that you must know is that एक बैंक जब लोन दे रहे कस्टमर को, वहां पे एक्सपेक्टेशन रहता है कि कस्टमर विल ऑफ कोर्स पे बैक द लोन अमाउंट, राइट, एंड उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है द कस्टमर विल पे दैट बैक एज वेल. सो लेट्स से इफ आई हैव गिवन 100 रुपीज टू अ पर्टिकुलर कस्टमर फॉर 1 year एंड आई एम सेइंग कि मैं आपको ये पैसे 15% इंटरेस्ट रेट पे दे रहा हूँ, राइट, तो एट द एंड ऑफ द ईयर लेट्स से यू नीड टू गिव बैक टू मी 115 रुपीज. यहाँ पे अजम्पशन ये है कि हाँ, कस्टमर पहले तो मुझे वो 100 रुपए वापस करेगा जो मैंने उसे उधार में दिया है. सेकंड, जो 15% इंटरेस्ट रेट है, जो 15 रुपए है, वो भी हमें वापस किया जाएगा, राइट. सो देयर इज दिस अजम्पशन दैट अ कस्टमर इज पेइंग दैट मनी बैक टू अस. बट ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं
जहां पर the customer is unable or the customer is not willing to pay back a bank, right? Corporates अपना businesses सेटअप करने के लिए बहुत huge loan amounts लेते, 300 400 500 करोड़ का अमाउंट की टर्म्स पे लोन्स लेते। अब उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहता, तो ये जो 300 400 500 करोड़ इन्होंने बोरो किया वो बैंक को पे नहीं कर पाते, राइट? नाउ इफ अ बैंक इज नॉट गेटिंग इट्स मनी बैक, right, the money that it owes to its customers, the bank is unable to pay that back, right? Also, the bank has to service the interest that it on the savings account that it's maintaining with its customers, right? At the end of the year, एक बैंक के जितने भी customers हैं in terms of depositors, वो तो सब बैंक के डोर स्टेप पे जाके बोलेंगे कि हाँ मैंने तो 1 साल के लिए मेरा पैसा दे रखा है, अब आप मुझे इस पे 4% इंटरेस्ट रेट दीजिए, right? So there are going to be hundreds and thousands of customers which are going to walk up to the doorstep of a bank and say that, hey, I've kept money with you, now you need to pay interest to me. Now, the ability of the bank to pay that interest to a customer is dependent on it, recovering money from the loans that it has given out, right? ये थोड़ा सा complicated है, but I hope I've been able to kind of cover the gist of it. At a summary level, the biggest risk that a bank typically faces is the inability of its customers to pay back the money that it has lent out or pay back the money that it has borrowed from the bank. That is all that you need to know at this stage.